Hello students, so the question is electron in hydrogen atom first jump from third excited state to second excited state and then from second excited state to first excited state. The ratio of wavelength lambda 1 is to lambda 2 emitted in two cases is. So this question is based on the topic hydrogen spectrum. In first case it is written that the electron jump from third excited state, that means initial state is 4, to second excited state, that means final state is 3. So we can easily find the lambda by the relation 1 upon lambda is equals to r 1 upon nf square minus 1 upon ni square. So 1 upon lambda 1 comes out to be equals to r 1 upon nf square, that is 9, minus 1 upon ni square, that is 16. Now taking the LCM of 16 and 9 we get 144. Numerator we get 7. So on solving here we get lambda 1 equals to 144 upon 7r. This is assumed to be first equation. Now in second case, in the question it is written that the electron jump from second excited state to first excited state. That means initial state is 3 and final state is 2. Now again using the formula for hydrogen spectrum, 1 upon lambda equals to r 1 upon 4 minus 1 upon 9. So on solving we get lambda 2 equals to 36 upon 5r. This is assumed to be second equation. Now we have to find lambda 1 upon lambda 2, so divide first equation by second equation, and here we get lambda 1 upon lambda 2 equals to 144 upon 7r multiply 5r upon 36, get r cancel out the r, 36 4 times will be this. So here lambda 1 ratio lambda 2 comes out to be 20:7. So the correct answer of this question is option B. The answer is option 2. I hope that answers your question. Thank you. हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा एन एक्साइटेड हीलियम आयन emits the two photons in a succession with a wavelength 108.5 nanometer and 30.4 nanometer. In making the transition to the ground state, the quantum number n corresponding to its initial excited state is, for the photon of a wavelength lambda, energy E is equal to 1240 electron volt upon में lambda और lambda in a nanometer. ओके तो यहाँ पे देखो एन एक्साइटेड हीलियम आयन. ओके यहाँ पे कैसा आयन है हमारा? हीलियम आयन है. ओके He प्लस आयन. ओके और यहाँ पे क्या कर रहा है? इमिट द टू फोटोन इन ए सक्सीजन विद द वेवलेंथ. ओके सो लैम्डा 1 टू वेवलेंथ है 108.5 नैनोमीटर और लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना है? 30.4 नैनोमीटर इन मेकिंग द ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट. सो क्वांटम नंबर n करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज, हमसे पूछा है n की वैल्यू क्या होगी, और जो एनर्जी है E इज इक्वल टू वो यूज़ करना हमें यहाँ पे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में लैम्डा होता है यहाँ पे हमारा नैनोमीटर में. ओके तो यहाँ पे देखो जो एक्साइटेड हीलियम आयन है यहाँ पे वो इमिट कर रहा है टू फोटोन्स, मतलब कि टू फोटोन्स इमिट कर रहा है. ओके और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कितना है? 108.5 नैनोमीटर और 30.4 नैनोमीटर. ओके तो E जो है यहाँ पे देखो वो किस में ब्रेक हो रहा है? E1 प्लस E2 में. ओके तो nth स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये एनर्जी क्या हो जाएगी? En इज इक्वल टू E1 प्लस E2. ओके तो En यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? En की वैल्यू होती है 13.6 क्या होता है? 13.6 Z स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर. ओके और E1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1240 ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
और यहाँ पे ये एनर्जी भी हमारी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और 1240 लैम्डा कितना है यहाँ पे हमारा 108.5, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा देखो प्लस 1240 अपॉन में लैम्डा कितना है यहाँ पे हमारा 30.4। ओके, ये सारे नैनोमीटर में ही है। तो जेड स्क्वायर, अब यहाँ पे हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ओके, फॉर हीलियम He प्लस के लिए जेड कितना होता है 2। ओके, तो यहाँ पे ये कर देंगे 13.6 इंटू में 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, एन की वैल्यू हमसे पूछिए यहाँ पे आ जाएगा 1240 अपॉन में 108.5 प्लस 1240 अपॉन में कितना आ जाएगा 30.4। ओके, सो ये कितना आ जाएगा देखो 13.6 इंटू में 4 अपॉन में एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1240 अपॉन में 108.5 प्लस 1240 अपॉन में 30.4। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 13.6 है और मल्टीप्लाई 4 करेंगे यहाँ से तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1240 आउटसाइड ले लेंगे 1 अपॉन में 108.5 प्लस 1 अपॉन में 30.4। ओके, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एन स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54.4 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 1240 और ये आ जाएगा 1 अपॉन में 100.5 प्लस 1 अपॉन 30.4। ओके, सो नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एन स्क्वायर आ जाएगा 54.4 अपॉन में 1240 और यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 अपॉन कितना है ये 108.5। ओके, तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारा 0.00921। ओके, 3 प्लेस तक लिखते हैं और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 अपॉन में कितना है 30.4, तो ये आ जाएगा प्लस 0.0328। ओके, 2 और 3 5 32894। ओके, सो नाउ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल के आती है 5। ओके, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो n की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे मेरी 5। Okay, so this is the answer for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching. Hello, we are given with a question and the question says in lithium plus electron in first bohr orbit is excited to level by a radiation of wavelength lambda. When ion gets de-excited to the ground state in all possible ways including intermediate emissions, a total of 6 spectral lines are observed. What is the value of lambda here? Right? So delta E is equal to Hc by lambda, right? That is the energy needed. So when we would have total number of transitions, spectral lines to be 6, right? So let us say that there are 3 levels. It is excited to the second excited state. So there would be this 1, there would be this 2, and there would be this 3, right? Only 3. Now we are introducing one more. So 4, 5 and 6. These are the possible 6. So it would be excited to n equal to 4, n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1. Right? So it would be n equal to 4 here. So from here, this is equal to n equal to 4. So 13.6. Right, into the lithium has Z equal to 3, so Z into Z square is into 9 minus 0.85 into 9. So what is 0.85 first of all?
So first of all, I'll write 13.6 divided by 4 square, that is 16. Right? The formula is delta E to be equal to 13.6 Z square by N square, right? That is the energy of nth level of hydrogen like atom, right? So from here, this would be equal to Hc by lambda, Hc by lambda here. So here, since this value is in electron volts, so it would be 9 bracket 13.6 minus 0.85 equals Hc by lambda. So lambda would be equal to Hc by this 9 into 13.6 into 0.85. So Hc in electron volt nanometer is 1240 electron volt nanometers. So we would get lambda in nanometers. So when we calculate this value, lambda turns out to be approximately equal to 10.8 nanometers. So our answer would be 10.8 nanometers, that is option A. Thank you.